Assalamu alaikum everyone. In this video, we are going to quickly go over all the mensuration formula that you will need in your O-level maths exam. So let's start. So first of all, we need to understand what area represents and what perimeter represents. So area jo hai, that basically represents that's the space that you have inside a figure, inside a 2D figure. So two-dimensional figures के अंदर जब अंदर space आ रही होती है, that is what your area is. And perimeter is the length of the boundary. Boundary ke length. For example, this in this rectangle, this boundary is like this. So is pure ki length jo hai, that will be your perimeter. Okay, so that's the difference between that's how you define area and perimeter. Perimeter का याद रखना है length of boundary. जो भी boundary में चीजें आ रही होंगी उन सबको add करना होगा. अच्छा, let's start with rectangle. Rectangle में क्या होता है? We have opposite sides that are equal and the angles are also 90 degrees. Its area is given by length into breadth, and the perimeter is the sum of all sides. So that's 2 times L. So you've got 2 L's here and you've got 2 B's here. So plus B, so 2 times L plus B, that is the perimeter. Area of a square, that's just side. किसी भी एक side का square कर दें because सारी sides equal होती हैं in any case. Perimeter is just 4 times that side because all sides are equal. So the sum of all sides is 4 times A here. Right? So that's fairly straightforward. We have a parallelogram. Parallelogram में क्या होता है? In fact, in a parallelogram, opposite sides are parallel to each other, right? So this side is parallel to this, and this side here is parallel to this side. Okay, how do you find the area of a parallelogram? एक side को आप base consider कर लेते हो. So let's say if we consider this side as the base, तो फिर दूसरी इसका जो distance होगा with the opposite side, perpendicular distance, that's called the height. So this is your height. इन दोनों को आपस में multiply कर देते, right? So keep in mind जो भी आप base consider करोगे उसके perpendicular जो है वो height होगी. So that's your area base multiplied by height. So basically it's coming from there. If you have it's called दो triangles के अंदर divide कर लो like this. If you have two triangles like this, these triangles have equal areas. तो एक triangle के area क्या होगा? Half into base into height, right? Half into base into height. इसको आप 2 से multiply कर दोगे. What do you get? You get base into height. So that's where this formula is coming from. Similarly, इस triangle के area, ये पूरी triangle है, इस triangle के area आप और भी एक तरीके से find कर सकते हो. We will just have a look at that in the next row. Triangle के area एक और भी होता है, that's half into AB sin theta, right? So half into AB sin theta, अगर आपके पास ये हो, एक triangle के area उसको आप 2 से multiply कर दो. So you also get another formula for the area of a parallelogram, that's AB sin theta. So A और B दो sides होंगी और उनके दरमियान वाला angle जो है that's theta. Okay, so these are the two formulas that you have for areas of a parallelogram. Perimeter क्या होता है parallelogram का? सारी sides का sum, opposite sides क्योंकि equal होती हैं, so this side is also A, that side is also B. You just say it's 2 into A plus B, that is the perimeter. Okay, we have triangle next. Triangle में, so triangle is a figure in which we have 3 sides. So what is the area of a triangle? It's given by half into base into height. Now we have to be a bit careful here. जो भी आप base consider करोगे, height जो होगी वो उसके perpendicular होगी, right? So if you were considering something other than this horizontal line as the base, for example, अगर आप AC को consider, अगर आप BC को base consider करते हैं, if you consider this side as the base, then आपको perpendicular height जो height आपको लेनी पड़ेगी, that will be like this, perpendicular coming like this. तो ये आपकी height होती है. Okay, so you have to be a bit careful about that. Base और height perpendicular होते हैं आपस में. Then there's another formula for this. अगर आपके पास इसमें दो sides हो किसी भी triangle के अंदर, for example, if you have this side here, that's B, and you have this side here, दो sides हैं, और उनके दरमियान वाला angle अगर आपके पास है, two sides and the angle between them, the included angle, then you can write this formula like this: AB into sine C, half into AB sine C, right? So दो sides जो आपके पास है and the angle between them, उसका sine आप उससे multiply कर दोगे, that will be the area of a triangle. What is the perimeter? Perimeter is just the sum of all sides. तीनों sides को add कर देंगे, that's A plus B plus C. Okay, then you have a trapezium. Trapezium क्या होता है? In which opposite sides are parallel to each other. So this side is parallel to this side. How do you find? So two sides are parallel, right? Parallelogram में सारी opposite दोनों opposite sides, चारों opposite sides parallel होती हैं. Trapezium के अंदर the only two sides are parallel, the other two are not parallel. How do you find the area of a figure like this? It's half into sum of parallel sides. So the side A
and B, these are parallel, इनको ऐड कर देंगे, parallel sides को ऐड कर देंगे, उनकी लेंथ्स को, और फिर हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. So half into sum of parallel sides multiplied by height. Height again is the distance between the parallel sides. Perpendicular distance between the parallel sides. ठीक है, ये perpendicular distance है parallel sides के दरमियान में, that is the height. Perimeter, जो भी आपकी sides हैं उन सबको ऐड कर दें. So you've got A, B here. Let's say the other sides were C and D. You just add all of them. You say this is A plus B plus C plus D. सारी sides को ऐड कर दिया. Length of the boundary. Okay. अच्छा, circle. सर्कल में क्या होता है? सर्कल का एरिया अंदर दैट्स गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, और इसका जो पेरीमीटर है जिसको हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, दैट इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दैट्स बेसिकली दिस रीजन हियर. ये आपकी बाउंड्री है, दैट इज गिवन बाय 2 पाई आर. ओके, सो सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर. अच्छा, हम सेमी सर्कल में आते हैं. तो सेमी सर्कल में क्या होता है? एरिया बिकम्स हाफ ऑफ दैट. सो पाई आर स्क्वायर का हाफ कर देंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर, दैट इज द एरिया of a semicircle. However, when we think about the perimeter, there are going to be two components of that. So एक तो वही हो गया 2 pi r जो ऊपर था उसका हाफ कर दिया, that's pi r here, right? So half of that, that's this region, that's this arc length here. ये जो arc है हमारे पास, वो हमारे पास 2 pi r को 2 से divide करने से आ गई. However, there's another part of the semicircle as well, and that is this length here. ये भी तो boundary है उसकी, perimeter the length of boundary होता है. We also have to add this thing there. So ये क्या है? This is the diameter, or you can say 2 times the radius. So we also add this here in the perimeter of a semicircle. Okay, then you have a sector. Sector में क्या होता है? We think of the whole circle. The whole circle's area is pi r square. तो उसकी कितनी रेशो आपके पास सेक्टर में आ रही है? So remember, पूरे सर्कल का जो एंगल होता है, that is 360 degrees, right? The angle here is theta. अब देख लेंगे वो उसी रेशो से आपके एरिया पर क्या बनना चाहिए? It's pi r square multiplied by theta over 360, right? So pi r square multiplied by theta over 360. The same thing happens here. जब आप length of arc find कर रहे होते हो, अगर आप ये length of arc find कर रहे हो, this length, what is this going to be? वही आप angle की ratio figure out करोगे, that's theta over 360 multiplied by the total length of arc जो हमारा circumference था, circumference से multiply कर दिया, right? So दोनों के cases के अंदर length of arc और area के अंदर हम क्या करते हैं? ये ratio figure out करते हैं. theta over 360, जो भी आपका angle होगा वो ऊपर आ जाएगा, और फिर area तो pi r square से multiply कर देंगे, length of arc है तो 2 pi r से multiply कर देंगे. But remember, this is not the perimeter yet. If we had to find the perimeter here, that's missing from here, so let me just write that down here. Perimeter of this sector would be equal to 2 pi r into theta over 360. That's the same thing that you have there. That is the length of the arc. But we also have to add the other two sides here. So we also have two more sides here of this sector, and that's this length here and this length here. So that's 2 times the radius. Both of our radius are. So we also add to this plus 2r. So that is the complete perimeter of this sector. Okay, so that's all the key 2-dimensional figures that you need to know about their formulas. Okay, then you have 3-dimensional figures. Now 3-dimensional के अंदर we don't talk about areas and perimeters like before. Now we have two things, and one is called the surface area, and then you have the volume. अब इसमें volume जो होता है ना, that is the space that is inside a 3D figure. आप इस तरह से सोच सकते हैं, आप पानी भर रहे हैं किसी फिगर के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट्स इन 3 डायमेंशन, तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है पानी का, पानी कितना आ जाएगा, उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, दैट इज गिवन बाय वॉल्यूम. ओके, सरफेस एरिया इज जो उसकी आउटर सरफेसेस है, जो उसके आउटर सरफेस है. फॉर एग्जांपल इज ये जो आपको ये क्यूब नजर आ रहा है, इसका एक सरफेस ये है, राइट, दिस साइड हियर, you have another surface on the opposite side here, you've got 2 surfaces there. इसी तरह से नीचे एक bottom surface होएगा, this surface, एक top surface है like this, and then you have 2 sides, एक आपको front में नजर आ रहा है, this one, and there's one at the back. So there are 6 faces of this. There are 6 faces of this, right? There are 6 faces of this cuboid. So surface area is the sum of areas of all of these 6 surfaces. ये जो सारे outer surfaces हैं, इनके areas को आप add कर देते. Okay, so that's the surface area. Now let's look at the surface areas and volumes of some of these common figures. So cube क्या होता है, जिसमें 3 dimensions के अंदर सारी sides equal है. So length भी वही है, breadth भी वही है, और height भी वही है. All of them are equal to each other like a dice. इसमें
आपका जो वॉल्यूम होता है that's just the product of these three lengths. So L into L into L, so that's L cube. What about the surface area? You find the surface area of any of these squares. आपके पास 6 faces हैं इसके, right? तो आप किसी भी एक face का area figure out कर लो. For example, this face on the right, इसका area कितना आएगा? It's going to be L square. Area of this face is going to be L square, so that's where this L square comes from. And क्योंकि 6 faces हैं, आप इसको 6 से multiply कर दोगे, so that's why you have 6L square here. Okay? Then you have a cuboid. Cuboid में क्या होता है? Not all the lengths have to be equal to each other, right? So different lengths. Length कुछ और हो सकती है, breadth कुछ और हो सकती है, height कुछ और हो सकती है, right? तीनों equal नहीं होंगे, दो equal हो सकते हैं, that's still a cuboid, but तीनों equal नहीं हो सकते, okay? What about the volume of this figure? That's just the product of those lengths, those three sides, length into breadth into height. What about the surface area? अब cuboid में क्या होता है? The opposite sides, the opposite surfaces, they are the same. So if this is a rectangle, that's B into H, the opposite surface there, उसका area वही होएगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम तीन surfaces के areas find करते हैं. ये surface हो गया, that's BH. Then you have another surface जो bottom पे आ रहा है नीचे. इसका area, that's L into B, that's a rectangle, right? Length into breadth, that's this rectangle. और इसी तरह जो left side पे rectangle आ रहा है हमारे पास, this rectangle, उसका area क्या हो जाएगा? That will be L into H, right? L into H. ये तीनों rectangles के areas आ गए. Why? Because this was L here and this height was H here. So we have the three rectangles areas. अब इनके जो opposite वाले rectangles हैं इन तीनों के, they're also the same. So that's why we multiply this by 2. Right? Each of those rectangles areas is multiplied by 2. Total 6 faces हैं. 3 faces के आप find कर लोगे, उसको 2 से उनको add कर दोगे और 2 से multiply कर दोगे. That's the surface area. Okay. You have a cylinder. Cylinder क्या होता है? You have one side that is like a circle here, or so it's like a glass, right? So you have a glass plate जिसका बिल्कुल जो है वो straight glass, right? एक circular end इस तरह से है, दूसरा circular end इस तरह से है. So that's a glass, right? Now you have two circular ends of this. एक end ये आ रहा है, इसके ऊपर एक circle है, जो दूसरी side होगी उसके ऊपर भी आपको एक circle इस तरह से नजर आ रहा है, right? So you've got two circles और दरम्यान में इन दोनों के दरम्यान में जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है दोनों सर्कल्स के दरम्यान में, इसको हम हाइट कहते हैं, राइट? अगर इस तरह पढ़ा हो आपको लेंथ लग रही होगी, दैट्स आल्सो फाइन, इसको आप लेंथ कह लें, हाइट कह लें, बट इट्स द डिस्टेंस बिटवीन those two ends of the cylinder, distance between the ends of the cylinder, right? That is your h here. So volume क्या होता है? Volume is given by pi r square h. That's basically the area of the circle multiplied by the height. ठीक है? What about the curved surface area? Curved surface area क्या होता है? Curved surface area is basically ये जो glass के side वाला surface है, right? So this surface जो round shape में surface आ रहा है, इसका area कितना है? That's given by 2 pi r h. ठीक है? लेकिन total surface area इसका क्या होएगा? Remember there's a curved surface area that's represented by green, that I've represented in green there. That's the curved surface. That's 2 pi r h. लेकिन दोनों sides पे circles भी तो हैं दोनों ends के ऊपर. तो that's also, अगर ये closed cylinder होता है, दोनों sides से closed है, अगर नीचे से भी closed है, ऊपर से भी आपने कोई lid रखा हुआ है, तो उनके areas भी आपको add करने पड़ेंगे. So it becomes 2 pi r h into 2 pi r square. अगर ये ओपन सिलेंडर हो, यानी कि ग्लास की तरह, नीचे आपके पास एक सरफेस पे है लेकिन ऊपर से ओपन है, तो फिर सिर्फ एक सर्कल ऐड करेंगे, 2 pi r square की जगह you will only have pi r square here. ठीक है? So you have to be a bit careful कि आप total surface area आपको चाहिए, ओपन सिलेंडर तब क्या होएगा, अगर सिर्फ कर्व सरफेस चाहिए सिर्फ, तो that is going to be 2 pi r h here. ठीक है? कर्व सरफेस का 2 pi r h होता है, that's basically coming from the perimeter of the circle. अभी हम देखेंगे नीचे प्रिज्म के अंदर, perimeter of the circle multiplied by this height, 2 pi r into h. Now, next we have prism. Prism क्या होता है? We have some shape that is being repeated. आप समझिए कि 2 dimensional को figure आपके पास इस तरह एक triangle है, इसके आपने stacks रखे हुए हैं, बहुत सारे stack आपने रखा हुआ है, और वो triangle repeat हो रही है बार-बार, right? So जिस तरह ऊपर जो cylinder था, it's similar to saying कि एक circle है, circle एक दूसरे के ऊपर हमने circles बहुत सारे रख दिए हैं, so it becomes a shape like this, like the cylinder, right? Like this glass. So इसमें होता क्या है?
इसका जो वॉल्यूम होता है क्योंकि आपकी फिगर रिपीट हो रही होती है बार बार, व्हाटएवर वाज द एरिया हियर ऑफ द बेस और द, इसको हम क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं, जो दोनों साइड्स के ऊपर सेम शेप आ रही होती है ना, दिस इज आल्सो नोन एज द क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जांपल, ये जो आपको यहाँ पे शेप नजर आ रही है, इट्स अ ट्रायंगल। तो दोनों साइड्स पे जो आपके पास ट्रायंगल्स हैं वो सेम शेप आ रही है, दिस ट्रायंगल हियर and this triangle on the other side, दोनों साइड्स पे सेम शेप आ रही है, that's a prism। तो ये जो सेम शेप होती है ना, इसको हम कहते हैं बेस या फिर क्रॉस सेक्शन। बेस भी कहते हैं, इसको क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। तो एरिया वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म इज गिवन बाय द एरिया ऑफ दिस शेप, जो भी वो शेप होगी जो रिपीट हो रही होगी, दोनों साइड दोनों एंड्स पे जो सेम शेप आ रही होगी, उसके एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। हाइट क्या होती है इसके अंदर भी, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, राइट। अगर इस तरह पड़ा हुआ है तो आपको हाइट इस तरह लग रही होगी, वर्टिकल पड़ा हुआ है तो वो आपको वर्टिकल हाइट लग रही होगी, इसका यहाँ पे आपको लेंथ लग रही है। बट एसेंशियली इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। जो दोनों साइड पे सेम फिगर है, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज द हाइट। ओके, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म के लिए, जिस तरह हमने ऊपर देखा सिलेंडर में क्या किया, ये दोनों एंड्स थे। दोनों एंड्स क्या थे? वी हैड two circles on both ends, so that was 2 pi r square, दोनों सर्कल्स के एरिया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो बेस है ट्रायंगल, उन दोनों के एरियाज, एक बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज दोनों साइड्स के ऊपर वो आ रही है। एंड देन यहाँ पे व्हाट वी डिड वाज 2 pi r h। 2 pi r h कहाँ से आ रहा था? इट वाज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। कोई भी प्रिज्म होगा, अब सिलेंडर भी जो है वो प्रिज्म की ही एक स्पेसिफिक टाइप है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, you have this triangle being repeated, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा, ऊपर हमने सर्कल का पेरीमीटर किया था, यहाँ पे जो ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, लेट्स से these sides were 6, 10 and 7। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, 6 plus 7 plus 10 multiplied by the height। ये आपके तीनों साइड्स वाले सर्फेसेस के एरियाज आ जाते हैं। जो राइट साइड वाला सर्फेस है ये वाला, जो लेफ्ट वाला सर्फेस है, और जो नीचे वाला सर्फेस है, इन तीनों के येलो सर्फेस है, इन तीनों के एरियाज आपके पास यहां से आ जाएंगे। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट देम सेपरेटली। पेरीमीटर बस फाइंड कर लें क्रॉस सेक्शन का, उसको मल्टीप्लाई कर दें हाइट के साथ, उन तीनों सर्फेसेस का आ जाएगा, उसमें ऐड कर देंगे जो फ्रंट वाला सर्फेस है क्रॉस सेक्शन ये वाला, और ये जो बैक वाला क्रॉस सेक्शन ये वाला, दैट विल बी योर कंप्लीट सर्फेस एरिया, कंप्लीट सर्फेस एरिया ऑफ दिस प्रिज्म। ठीक है। अब प्रिज्म्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, जहां पे आपके क्रॉस सेक्शन क्या है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस ट्रायंगल, बिकॉज़ दिस इज द सेम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे वही ट्रायंगल आ रही है, इट्स अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म, इसको हम क्यूबॉइड जो है उसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कह सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक सेम शेप है, नीचे भी वही है और ऊपर भी वही है, सेम शेप इज बीइंग रिपीटेड। तो इस तरह क्यूब में भी वही है, क्यूब इज आल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म। सो ऊपर जब मैं सारे देखे हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ऑल ऑफ दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रिज्म। इस तरह पेंटागोनल प्रिज्म भी हो सकता है, पेंटागन एक साइड के ऊपर, वही पेंटागन आपके पास दूसरी साइड के ऊपर आ रहा है, सेम फिगर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ एंड्स, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रिज्म। इनके वॉल्यूम फाइंड करना होता है, इन पेंटागन्स के एरिया फाइंड करेंगे और हाइट, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हेक्सागोनल प्रिज्म, बेस इज हेक्सागन, क्रॉस सेक्शन इज हेक्सागन, दिस इज हेक्सागन, ऑपोजिट साइड पे भी वही फिगर है, तो दोनों एंड्स के ऊपर सेम आपके पास 2D फिगर आ रही हो, दैट्स अ प्रिज्म। ओके, अच्छा, देन वी हैव अ स्फीयर। स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम जो है आपको उसने दिया होगा, और आपको इसका सरफेस एरिया भी आपने दिया, उसने दिया होगा। ऊपर वाले सारे हमने फॉर्मूलाज देखे हैं, नन ऑफ दीज विल बी गिवन इन द एग्जाम। अब यहां से आगे आपको फॉर्मूला उसने दिए भी होते हैं एग्जाम के अंदर। सो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर दैट इज 4 pi r square and volume of a sphere that is 4 over 3 pi r cube. ठीक है, you just have to know this. Volume is the space that can be inside that. Surface area, ये जो उसके बाहर वाला surface है। For example, if you have a ball, tennis ball के ऊपर जो green part होता है, that is on the surface of the ball. वो जो green part है वो कितना area है, that is given by 4 pi r square. Okay, ये outer region इसका। अच्छा, hemisphere is just that sphere cut in half. ठीक है, इसमें कर्व सरफेस एरिया, अभी जो कर्व सरफेस है मैंने जो ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, that is just going to be half of this. 4 pi r square का हाफ कर दिया, that is 2 pi r square. लेकिन अगर आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होता,
ऊपर जिस तरह हमारे पास यहाँ पे हुआ था सेमी सर्कल के केस के अंदर, उसी तरह यहाँ पे भी एक तो हमारे पास वो कर्व पार्ट आ गया, लेकिन ये उसको काटने की वजह से एक सर्कल भी हमारे पास बन गया ये ब्लू के अंदर, ब्लू कलर के अंदर, राइट? दैट्स अ सर्कल। टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, 2 pi r square के अंदर we also add this area of that circle, that's pi r square, उसको ऐड किया, the total turned out to be 3 pi r square. So curved surface area of hemisphere, that's 2 pi r square. Total surface area आप यहाँ से देख सकते हैं, curved part plus the area of the circle, that's 3 pi r square. ठीक है, तो इसलिए आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ सकता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप you can figure it out yourself. जो आपके पास outer surfaces है उनके areas को add करें essentially. What about the volume? Volume तो बस आपने उसको half कर दिया, 4/3 pi r cube को आपने half किया, that results in 2/3 pi r cube, that is the volume of the hemisphere. Okay, next we have cone and pyramid. अब इनके formulas भी they look fairly similar. Curved surface area of the cone, अच्छा ये curved surface area आपका cone का क्या होता है? That is given by pi r l. L is basically the slant height. जो side पे length आ रही है, this is your L. This is the slant height. Curved surface area ये होता है, कभी-कभी इसने आपको height और radius दिया होता है, curved surface उसने आपको slant height नहीं दी होती, तो फिर आप Pythagoras से figure out कर सकते हो, because we know it's a right angle triangle, so L can be figured out like this. अगर उसने आपको already नहीं दी हुई, अगर आपको total surface area figure out करना है, कि yellow part that you see here on the figure, that is the curved surface, that is pi r l, उसमें आपको ये नीचे वाला circle भी add करना पड़ेगा, so it becomes pi plus pi r square. So pi r l plus pi r square, area of the circle, that is the complete total surface area. That's the total surface area of a cone. Volume of a cone, that is 1/3 into pi r square h. अच्छा, एक और फिगर होती है, that's called pyramid. Pyramid में क्या होता है, एक कॉर्नर होता है आपके पास जिससे फिगर के सारे एंड्स आपके पास अटैच्ड होते हैं. So एक कोई बेस है, so for example in this case this is the base, this is our base. उस बेस के सारे एंड्स जो है ना वो एक पॉइंट के साथ अटैच्ड है, वो एक पॉइंट उस बेस के बाहर है और उस पॉइंट के साथ सारे एंड्स अटैच्ड हैं. So you can see here all of the ends of the base, all of the corners, all of the vertices of the base are attached to that point on top, right? एक पॉइंट आपके पास होता है जिसका सारे अटैच है. कोन भी देखें, इट्स वेरी सिमिलर. ऊपर एक पॉइंट है, नीचे सर्कल के सारे पॉइंट्स के साथ वो कोन बेसिकली अटैच्ड होती है, राइट? It's very similar. It's not a pyramid exactly, but it's very similar to a pyramid in that sense कि एक पॉइंट है उसके साथ सारे पॉइंट्स कनेक्टेड. Now what about the volume of a pyramid? जो भी आपकी बेस होगी, whatever is the base, बेस का एरिया into 1/3 multiplied by the perpendicular height. Now be careful about height here. Height हमेशा perpendicular होगी यहाँ पे. जो भी आपकी बेस है उसके साथ perpendicular यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? You have to be a bit careful here about the figures as well. ये आपको यहाँ पे लग नहीं रहा, but it could actually be a square or a rectangle, right? तो वो 3 डायमेंशन के अंदर फिगर्स आपको देखने में कुछ और लगती हैं, तो आपने ध्यान देना उसने आपको क्वेश्चन में क्या लिख के बताया होगा कि वो क्या फिगर है, बेस क्या है, बेस रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ और चीज है, उसने आपको बताया होगा. और इट डजंट it's not very clear from the figure itself. Okay? अच्छा, और इसका सरफेस एरिया क्या होएगा, बेस का एरिया फिगर आउट कर लेंगे और जो भी आपके पास साइड्स पे ट्रायंगल्स आ रही हैं, साइड्स पे हमेशा ट्रायंगल्स आ रही होंगी, उनके एरियाज को ऐड कर देंगे. ठीक है, इसको आपको अलग-अलग देखना पड़ेगा. अक्सर in many cases सारे ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल भी आ रहे होते हैं. अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बन रही हो आपकी, तो वो आप एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे बाय द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देयर. बट इन सम केसेस दैट कैन बी डिफरेंट एज वेल. सो आपने सारे आउटर सरफेस के एरियाज को बेसिकली ऐड कर देना, राइट? बेस के एरिया प्लस द एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स दैट यू हैव ऑन द साइड्स. अब पिरामिड्स के भी देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स. देयर कैन बी अ स्क्वायर पिरामिड जहां पे आपकी बेस स्क्वायर है. It can be a hexagonal pyramid, for instance. यहाँ पे base आपकी hexagon है, right? Again, formula remains same. It's 1/3 into base का area, whatever the base is, base का area figure out कर लोगे. अगर hexagon है, for example, उसको break down कर सकते हो in maybe in 2 trapeziums or maybe in a bunch of triangles. उसको आप find कर सकते हो उससे. And then multiplied by the height, and height is always perpendicular. अब आपको मुझे ऊपर नजर आ रहा था pyramid. अगर इसको ओपन करके देखें, this is what it actually looks like. So आपके पास एक रेक्टेंगल है नीचे, this is 20 length, this is 10 length. ठीक है, नीचे आपको नजर आ रहा है that's a rectangle. इसको आप खोल देंगे
So ये triangles बन जाती हैं. You've got 4 triangles on the sides, 1, 2, 3 and 4. अगर आपको surface area figure out करना होता, अब ये base के area जो rectangle के area वो figure out कर लेते हैं, और इन सारी 1, 2, 3, 4 triangles के area उसमें add कर लेते हैं. That will be the surface area of a pyramid. All right, I hope this is helpful. You can see on the screen in a few seconds some past paper questions on mensuration that we've done in another video, and also so you can have a look at that if you want. Thank you very much for watching until the end. I'll see you again in another video. You'll also see the other checklist videos in the description below this. All right, I'll see you again. Allah Hafiz.